नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन और आप देख रहे हैं बिट्स एंड पीसेस। आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं डॉक्टर अरविंद मित्रा। भारत के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में गिने जाते हैं। इनका वैज्ञानिक जीवन प्रयोगशाला अनुसंधान से लेकर विज्ञान प्रशासन तक फैला हुआ है। आपने हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर अंटार्कटिका की बर्फीली जमीन तक, महासागर की गहराइयों से लेकर विज्ञान नीति निर्धारण तक हर स्तर पर काम किया है। भारत सरकार में वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय में सचिव के रूप में कार्य करते हुए आपने वैज्ञानिक नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विज्ञान में आपके योगदान और बहुआयामी अनुभव को देखते हुए यह बातचीत भारत के विज्ञान, तकनीक और अनुसंधान विकास की दिशा में एक मूल्यवान दृष्टिकोण प्रदान करेगा। आपका स्वागत है सर। थैंक यू श्वेता। साइंटिस्ट की लाइफ कैसी होती है? Well, science, I would say, is a very noble pursuit. Or science is basically searching for new knowledge, and therefore, it is a very dedicated pursuit. It is a pursuit that needs a lot of patience. Chances of failures are there. फिर उन failures से सीख कर again try to reinvent the way you are approaching a problem. So it's always a learning experience. A scientist is a learner all throughout the life. So जिनको पढ़ाई से डर लगता हो, जो सोचते हो कि नहीं बस अब एक चीज़ हमें बनना है लाइफ में और बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ के बनना है, उनको ये ऑप्शन ऑप्ट नहीं करना चाहिए? नहीं, डिपेंड करता है। अभी साइंस का जो दिशा है वो काफ़ी चेंज हो रहा है इन द करंट सिनेरियो। तो डेफिनेटली लगन तो चाहिए ही। साइंस, एज आई टोल्ड यू, बड़ा एक परस्यूट है, एक इट इज़ अ what should I say, it's a never ending journey. It's a never ending thing, and it is also a tapasya in a way, because आप कुछ सोच कर एक आप वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट लॉन्च कर रहे हैं मगर रिजल्ट्स कुछ दूसरे आ जाते हैं, तो फिर आपको फिर सब कुछ चेंज करके अगेन यू हैव टू मॉडिफाई द पाथ यू आर टेकिंग। तो ये एक कांस्टेंट स्ट्रगल और एंडेवर रहता है। लेकिन मौजूदा दौर में सर हम देखें कि जिस तरह से देशों के बीच एक स्थिति बन रही है या फिर हर देश को एक आगे बढ़ने की होड़ है, उसमें भारत की पोजीशनिंग आप कहाँ देखते हैं? साइंस के दृष्टिकोण से उसकी दशा और दिशा क्या है? अगर आप देखते हैं लास्ट फ्यू इयर्स में द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज सेंट्रल पिलर ऑफ डिप्लोमेसी इज कमिंग आउट वेरी क्लियरली, एंड दिस इज प्रॉम्प्टेड बाय मेनी फैक्टर्स। एक तो क्लाइमेट वेगरीज ऑफ क्लाइमेट चेंज, the current geopolitical situation, supply chain breakdown, the pandemic, crisis in energy and food. So all these things are global challenges, human challenges, और इनका solution खाली science and technology ही दे पाएगा। So the role of science in international diplomacy is becoming very, very important. The position of a country in Committee of Nations is measured by its technological prowess. And its scientific ability. Recently आपने फॉलो किया होगा, हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा कि all our future relationships with countries will be driven by our ability to engage with them in the technology front. So that is why now S&T is becoming a very central pillar of diplomacy. एनर्जी हो, पावर हो, हाँ, फिर ये सस्टेनेबिलिटी हो, सब कुछ आजकल साइंस टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है। सो आवर बार्गेनिंग एबिलिटी, डिफेंस, स्ट्रैटेजिक एंड नॉन स्ट्रैटेजिक एप्लीकेशन ऑफ साइंस, बोथ स्ट्रैटेजिक और नॉन स्ट्रैटेजिक एरियाज। जनरली साइंटिस्ट नॉन स्ट्रैटेजिक एरियाज में कंट्रीब्यूट करते हैं, बट देयर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक एरिया। So it has become very important now. It's become a central piece of diplomacy today. So what is the position our country holds? So India holds a very promising position for various reasons. हमने साइंस टेक्नोलॉजी में लास्ट 75 साल इन्वेस्ट किया है। ठीक है, एज अ ग्रोइंग नेशन देवर वी परहैप्स हैव नॉट come very far. Or we've not actually invested that much one would have expected, and we are still not investing, which many of the other countries, like most of the advanced countries, unke 2% of the GDP they invest in science and technology.
हमारा रफली गवर्नमेंट का जो टोटल जो इन्वेस्टमेंट है इंक्लूडिंग बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर इज समथिंग लाइक 0.7%, which is very, very low compared to what most of the advanced countries have done. But you know, over the years we have actually invested in science and technology, and the results were very clear. When COVID broke out, हमारे पास एक मास्क भी नहीं था, बट हमारे पास वो ज्ञान थी नैनो टेक्नोलॉजी का, नैनो फाइबर का, जिससे मास्क बन पाया. तो फ्रॉम मास्क टू डायग्नोस्टिक टूल्स टू ऑक्सीजन कंसंट्रेटर टू मेकिंग वैक्सीन्स, हम एज अ नेशन जानते थे वी आर वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग. एक साल 1.5 साल के अंदर हमने मैन्युफैक्चर खुद नहीं, R&D करके उसको पहले सप्लाई टू अदर नेशंस, एंड देन वी नॉट ओनली वी फर्स्ट डिड एन R&D, डिड द डेवलपमेंट वर्क एंड देन स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग एंड गेव इट टू द वर्ल्ड. सो इट वाज व्हाट इज कॉल्ड health diplomacy. It's a new term was created, Maitri through health diplomacy. So इसीलिए साइंस का इम्पोर्टेंस जो है अभी काफ़ी बढ़ रहा है, बिकॉज द प्रॉब्लम्स आर वेरी ग्लोबल इन नेचर, एंड ये ग्लोबल प्रॉब्लम्स तभी सॉल्व हो पाएंगे जब साइंटिस्ट ऑल कम टुगेदर एंड वर्क इन अ पार्टनरशिप मोड. सो पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशंस, आप जब साइंस की बात करते हैं डिप्लोमेसी में, कोलैबोरेशंस बोथ एट सब नेशनल, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल. कोविड के दौरान हमने ये देखा कि भारत की जो पूरे ग्लोब में जो पोजीशनिंग थी बहुत ही स्ट्रांग रही. यस, स्ट्रांग पोजीशनिंग थी. और ह्यूमन जो हमारा ब्रेन है उस पूरे दुनिया में हर जगह है, और हम वी आर डूइंग ग्रेट वर्क. बट डू वी वेट फॉर सच काइंड ऑफ critical situations to ये एक सवाल मेरे ज़हन में भी आया. No, you are very correct, and you know, it should become business as usual. Business as usual cannot be followed, you know, and what COVID told us is that we have to now focus our science in a way that it provides solution to the requirement of the people. Real world problems जो है उसका solution science and technology ही दे पाएगी. और हमारा साइंस को इसलिए अभी एक नया दिशा में जाना है. साइंस बहुत इम्पॉर्टेंट है. न्यू नॉलेज क्रिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू इन्वेस्ट इन क्रिएटिंग न्यू नॉलेज. साइंस में इन्वेस्टमेंट कौन करेगी? गवर्नमेंट ही करती है, करेगी भी, करना चाहिए भी. मगर द मनी यू इन्वेस्ट इन क्रिएटिंग नॉलेज, राइट, दैट नॉलेज हैज़ टू बी ऑल्सो कन्वर्टेड बैक टू वेल्थ. यस, राइट, तभी वो सर्कल पूरा होता है. तो जो आपने अभी जिक्र किया 0.7% ऑफ द जीडीपी इंडिया इज इन्वेस्टिंग, सर वो 0.7% का जो उससे जो रिजल्ट निकलना चाहिए वो हम ला पा रहे हैं? आउटपुट इज देयर? so yeah, this is a very difficult question to answer straight away, but it is a question that we need to answer. You are true. Why should government invest more if the output is not commensurate? So how do we measure the output? The whole process of measuring output in science, the input, throughput, output, dispersion mechanism and impact, इसको अभी हमें नए दिशे से देखना है. न्यू नॉलेज क्रिएट करना, वर्ल्ड पब्लिकेशन करना, स्टूडेंट्स को ट्रेन करना, ये तो स्वाभाविक है, एवरी साइंटिस्ट को करना ही है. मगर एवरी साइंटिस्ट हैज़ टू लुक नाउ बियॉन्ड दैट. तो वो जो आप कह रहे हैं 0.7% उसका इम्पैक्ट क्या है, उसका इम्पैक्ट लाने के लिए एक कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क चाहिए. केवल साइंटिस्ट अलोन नहीं कर पाएंगे, ये भी फैक्ट है. यू हैव हर्ड ऑफ स्टार्टअप. इंडिया हैज़ बिकम अ स्टार्टअप नेशन. हाँ, अ नेशन विच वॉज अवर्स टू टेकिंग रिस्क हैज़ बिकम अ रिस्क टेकिंग नेशन. If you talk to a young graduate from IIT today, nobody wants to go for a white collar job. You know, everybody wants to have his or her own enterprise. So that is a change that has happened. So not necessarily that scientists जो research कर रहे हैं उसको entrepreneur बनना हो, but basically knowledge creation तो academicians और researchers और scientists ही करेंगे. Knowledge application जो है startups करेंगे और industries करेंगे. तो इन इक्वल मेजर आवर इंडस्ट्रीज हैव टू कम अप. आपने 0.7% का जिक्र किया है. आप हैरान होंगी, आप शायद या आप जानते भी होंगी कि अगर इफ़ यू सी द डेवलप्ड कंट्रीज, जो टोटल उनका जीडीपी इन्वेस्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है, 70 to 80% कम्स फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर.
20% comes from government. और हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा है, रिवर्स है। पहले तो और भी बुरा था स्टैटिस्टिक्स, अभी स्लोली इंप्रूव कर रहा है। सो आवर इंडस्ट्रीज हैव टू इन्वेस्ट इन इक्वल मेजर in research and development, and they have to consider research and development as a core of their enterprise. अभी आपने सर जिक्र किया स्टार्टअप का, और स्टार्टअप के बारे में मैं सुनती हूँ जो आप कह रहे हैं कि यंग जनरेशन, और ख़ास तौर से अगर मैं जनरेशन जी जो सुनते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं स्टार्टअप की ओर ही रुझान है उनका। लेकिन अभी पीछे एक बयान आया था हमारे उद्योग और वाणिज्य मंत्री का, पीयूष गोयल जी का। उन्होंने कहा कि हम सेमीकंडक्टर्स कब बनाएंगे और चिप्स और आइसक्रीम कब तक बनाते हैं। Exactly. हाउ डू यू लुक एट इट? Oh, it is a very relevant. उसको लेके काफी कंट्रोवर्सी भी हुई। No, I don't think it is a very relevant statement he said. If you look at the startup ecosystem of our country, how it evolved, it is a growth process. हमने शुरू किया था, India was known as a जुगाड़ nation. That was our innovation. हाँ, वो गाड़ी नहीं चल रहा है, वहाँ से पहिया किसी का लाया, जोड़ा, चला दिया। हाँ, फ्रॉम इनोवेशन वी बिकेम अ सर्विस नेशन। सर्विस से हमने थोड़ा प्रोडक्ट में गया। हमारे सारे जो यूनिकॉर्न हैं वो एग्रीगेटर हैं। कोई साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हमने नहीं किया, हमने एग्रीगेशन किया। ये सारे प्लेटफॉर्म्स जो आप देखती हैं, हमारे मोस्ट ऑफ द यूनिकॉर्न्स, यू नो, आई हैव ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर देम, बट दे आर बेसिकली ऑल सर्विस प्रोवाइडर्स। अभी जो इफ यू रियली want to become a technology leader, a manufacturing nation, which is required for you to become so-called developed nation by 2047, you need to have startups which have strong, deep science and technology behind it. But who is thinking about it? I think no So one. it is happening. Government is now very proactively thinking, and I'll give you examples. अभी जितने मिशंस हमारे लॉन्च हो रहे हैं, सेमीकंडक्टर मिशन, स्पेस मिशन, ड्रोन मिशन, जितने भी हैं, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट ऑफ स्टार्टअप्स बिल्ट इन देम। ओके, हाँ, तो इसमें फोकस बिल्कुल हो रहा है कि वी शुड बिकम अ प्रोडक्ट नेशन नाउ। तो दैट इज एन एवोल्यूशन, एंड दैट इज व्हाट द मिनिस्टर अलूडेड टू, दैट वी मस्ट नाउ फोकस ऑन डीप टेक इनोवेशन, दैट इज कॉल्ड डीप साइंस बेस्ड डीप टेक इनोवेशन स्टार्टअप्स। तो अभी हम देख रहे हैं, यू नो, मैं तो अभी IIT से जुड़ा हूँ, पहले कानपुर में था, अभी दिल्ली में है। देयर इज अ ह्यूज शिफ्ट। बच्चे जो हैं, दे आर लुकिंग एट क्वांटम फ्रंटियर्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम कंप्यूटर्स, न्यू स्टार्टअप्स। स्पेस में हमारे पास जहाँ 100 स्टार्टअप्स थे, आज 2000 स्टार्टअप्स हो गए हैं, एंड दे आर यूजिंग यू नो, इट्स ऑल टेक्नोलॉजी बेस्ड। बट उसमें वी हैव टू चेंज द वे वी हैव बीन सपोर्टिंग स्टार्टअप्स, बिकॉज अगेन थोड़ा पेशेंस चाहिए उसके लिए, ओवरनाइट होता नहीं है जो डीप टेक स्टार्टअप्स हैं। तो वो आपने कहा ना, वो साइंटिस्ट थोड़े टाइम लगता है, तो यस, द पेशेंस इज रिक्वायर्ड इन दैट, एंड वेयर वी सक्सीड वी शुड इन्वेस्ट मोर। द चैलेंज विथ आवर कंट्री, श्वेता, इज बेसिकली, you know, as a democratic country with such a diverse population, is balancing equity with excellence. right. हाँ, तो लोग कहते हैं कि ठीक है, आपके IITs हैं, they are doing very well. What about your universities? They are neglected. वहाँ रिसर्च नहीं हो रही है। 2 tier 3 tier जो cities हैं, उसमें आउटस्टैंडिंग ब्रेन्स हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलता है, बिकॉज दे कांट कम टू बिग सिटीज एंड IITs एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड आइसर्स, सो दैट बिकम्स अ चैलेंज फॉर देम। तो हमारे पास जो है वो बैलेंस करना, वी हैव टू डू अ बैलेंसिंग एक्ट। So that also at times becomes a thing, because we have to grow the base. As a nation, if you look, the number of scientists we have per million population is one of the lowest in the world. Okay. Number of scientists, million population. If you compare to developed countries, we are very much low. तो उस बेस को बढ़ाना है। वो 20 IIT से और 10 IISR से everything cannot be done. तो we have that balancing act to be done. Government is very proactive. अभी इन्होंने 20,000 करोड़ का बजट अनाउंस किया है टू सपोर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्री। तो इसमें पुल एंड पुश फैक्टर मैं बिलीव करता हूँ, जैसे गवर्नमेंट इज प्रोएक्टिव, द इंडस्ट्रीज हैव टू आल्सो कम फॉरवर्ड। स्पेस में इन्होंने इन स्पेस एस्टैब्लिश किया है टू टेक ऑल द डेटा दैट वी गेट फ्रॉम स्पेस टू कम टू द मार्केट टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू द पीपल। सो लॉट ऑफ चेंजेस आर हैपनिंग। हेल्थ साइंस में हमने देखा है 80% ऑफ आवर health requirement, all our equipment, hospitals, all our MRIs, testing machines
जो आप यूज़ करते हैं डायग्नोस, सारे इम्पोर्ट होते हैं. Slowly that import basket, we are looking into the import basket and we are developing our own indigenous substitution. So change is happening. It doesn't happen overnight, but there is a shift in focus. So that I think, I'm an ever optimistic. I irrespective of who is in power or not, I always felt that India as a nation has that inherent strength. आपने जैसे बोला, Indians के grey matter इतना अच्छा है. Anywhere they go in the world, they shine. It's just a question of creating the environment. जैसे अभी आपने कहा कि government is quite active and funding, giving lots of money. But अगर हम देखें तो आपने लंबा समय लैब में गुजारा है. Almost 15 years, sir? 15-20 years. And then you associated yourself with the administration as well. तो ये दोनों का अनुभव आपको है. कहाँ दिक्कतें आती हैं सर? अगर हम इसकी बात दिक्कतें दोनों तरफ है actually. In the sense that scientists always complain that there is no adequate funding, which is true. Okay. As I told, ठीक है, because as a nation we have other challenges to meet. As a nation, our investment in R&D is still low compared to most of the countries that I alluded to. But also at the same time today, as a bureaucrat, when I sit and when I ask the government for money to support science, they want tangible outcome to come out, the visibility and impact of science to the growth and development of the country. So that is the gap that has to be bridged. So as a bureaucrat, it's important for me to be a scientist, to understand what are the pains and pangs of science, what are the pleasures of doing science. So people ask me, as an active researcher, I've published in papers like Nature and all top journals, why did you decide to move to science? Right, sir. Science administration. That is my question too. This is a valid question, and I was also in the crossroad of my career when I moved from the lab to Delhi to science bureaucracy. But I always, later on I realized in hindsight, what I did was perhaps correct, because somebody has to understand when you are sitting as a science bureaucrat, when you are disbursing money to the whole country, you are working for the nation, you are not working for yourself. Absolutely. As a scientist, you are always working for yourself. हमें ये पेपर छापना है, उस जर्नल में उसकी इम्पैक्ट फैक्टर इतनी है, वो हमारे CV में जाती है, हमें नेक्स्ट प्रमोशन मिलेगा, नेक्स्ट ग्रांट मिलेगी उससे. But as a science administrator, you are looking into the entire horizontal sort of breadth of things, right from country's requirement to people's requirement, and then the pleasure of funding something and seeing that, oh, this scientist has done so great, this lab has led to this product generation. That is a different pleasure altogether. Right. So I think, I don't have any regrets, and I feel that qualified scientists who have seen the world, who have done the best of science should come to science administration. In US में अगर आप देखती हैं, National Science Foundation में, which is the top funding agency for US, almost 60% of their science managers, they come from universities. Okay. वो rotation wise में आते हैं, 3 साल 5 साल, they bring new knowledge in the science administration because they know what is happening in the frontiers. So I think it is important that good scientists should come to science administration. You cannot run away from it. Tomorrow you become a director of a lab. अब IIT का director जब बनते हो तो वो system से ही आते हो. The administration then takes over. But I feel this government is quite action oriented as well, because I see in schools these days वो ATL की classes भी चलती हैं. Atal Innovation Labs सारे बने हैं. And the children are being encouraged to participate and do something new. अनुसंधान फाउंडेशन जो है उससे क्या फायदा पहुंचा है सर? So अनुसंधान फाउंडेशन जो है ये एक नया सोच से बनी है. Okay. This will not only give a strategic direction to the overall science and technology and innovation ecosystem, but also a very important role of the Anusandhan Foundation, 2 important roles in fact. एक तो to encourage this collaboration, this ecosystem की जो मैं बात किया, because you cannot work in isolation. तो एक ecosystem create करे जिसमें
entire value chain of a scientist, of a startup, of a public sector, of an industry. They all are. They are all associated in this national endeavor. Okay. And they are not only associated in creating new knowledge, but also fiscally contributing. Okay. तो अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन अगर आप देखेंगी तो almost a large portion of the fund it has to get from non-governmental sources. All the ministries are now using because it. With the pace, with the speed it is growing. We have to match. Whether it is civil aviation, whether it is railways, whether it is highways, you have to plan your highways to stop accidents. You have to provide your highways to make sure that there are no jams on the road. How do you monitor whether there are potholes on the road? You know, it is through drone technology. You know. So I think the integration of technology in line ministries is also happening. So that is also a very exciting phenomena. Now, line ministries have started funding in science and technology. If not in pure science, but at least in the development of technology. Indirect way. In their way, which helps them to provide better service. Absolutely. So उसमें demand for a scientist and a technologist have now become much more. It's a challenge for the scientists. लेकिन जो changes आप बता रहे हैं सर, ये changes को सुन के एक बार तो मन में जरूर आ रहा है कि क्या हम वास्तव में अमृतकाल में जी रहे हैं सर? दिशा तो clear है, दिशा तो है. Our efforts have to be relentless. It has to be persuasive, and everybody has to participate. I feel that is very very important. हम नहीं कह सकते हैं कि हम इस लैब में काम कर रहे हैं, इस डिपार्टमेंट के लिए कर रहे हैं, इस इंस्टीट्यूट के लिए कर रहे हैं. If you have a larger goal, I mean, I may be philosophical. If you have a larger goal of our country there, I think we can do it. We have all the right ingredients. And my own experience, you know, handling the pandemic, जब मैं PSA ऑफिस में था, जब ये पैंडमिक स्टार्ट हुआ, हाहाकार मची हुई थी. बिल्कुल बिल्कुल हमारे पास कुछ नहीं था, पता ही नहीं क्या करेंगे हम. बट एवरीबडी अंडरस्टूड एज अ नेशनल चैलेंज. सब ने एक प्लेटफॉर्म में आया और सबका जो स्ट्रेंथ था वो जब टेबल में लाया एक साथ और जब जुड़ गए एक साथ तो हमने कर पाया. हर एक चैलेंज का सोल्यूशन निकाल पाया. हाँ, सोल्यूशन निकाल पाया. सर अभी आपने सिविल एविएशन, हेल्थ, ये सारे सेक्टर्स गिनाए, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर जो है जहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत ही क्रूशियल रोल, एग्रीकल्चर ऑफ कोर्स, डिफेंस. एग्रीकल्चर हमारे अपने लोगों के लिए पेट भरने के लिए और डिफेंस खुद को बचा के रखने के लिए भी, जिस तरह से हम घिरे हुए हैं. कहाँ हैं हम अभी? सो डिफेंस इज अ स्ट्रेटेजिक सेक्टर, डिफेंस, न्यूक्लियर स्पेस. इसमें चैलेंजेस तो हैं, हम तो नहीं कहेंगे कि चैलेंजेस नहीं है, बिकॉज बहुत रैपिड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो रहा है. इसमें आई थिंक इंडस्ट्रीज हैव टू कम फॉरवर्ड. इसके बिना वी वोंट बी एबल टू डू, बिकॉज डिफेंस में एट द एंड ऑफ द डे प्रोडक्शन है. वॉट एवर यू डू in the laboratories, critical technology, that has to be productized. So there is a need therefore for industries to come forth in a big way. एक program defense ने start किया IDEX करके, which is a challenge which Navy, Air Force and Army they are providing. They are giving a list of challenges, and our startups are coming and providing solutions. And you would be amazed, these startups at 1/10 the cost, at 1/10 the time, they are able to provide the solutions which Navy, Army and Air Force is adopting. Oh. Yes. And they are adopting. उसमें एक बहुत important चीज़ है कि Navy, Army, Air Force is providing the basic infrastructure, pilot testing के लिए, support to the startup, and finally उनका procurement. कल जो startup कर रहा है उनका अगर procurement नहीं हो उस technology का, तो फिर वो they cannot survive. तो उसमें procurement भी is also assured. तो if we create this ecosystem, we can do it. अगर आप देखते हैं हमारा defense exports have increased quite a bit, you know, over the last few years. That means countries are ready to buy some of our products we are manufacturing. So it's a process. It's a slow process. It doesn't happen overnight. Since we hail the Make in India narrative, yes, and narrative, yeah. उसके बाद हमारे HAL से तेजस भी निकल कर आया. That makes us strong enough. Are we compatible with the way we need to be? We have a long way to go. I'm not saying that in defense, you know, we have reached where, you know, well, how it has happened, you tell me. When you talk of a Lockheed Martin,
when you talk of a Raytheon, when you talk of these big companies which Western world has developed, Airbus, Boeing, कैसे किया? There was a tacit support of the government from behind. Government ने उसको support किया. Government ने उसको बोला कि I need cutting edge. ये आपका goal है. I am assuring that I will procure that for you. तो defense में procurement is very important. आज आप टेक्नोलॉजी बनाए कुछ, उसका सिविलियन यूज तो बहुत लिमिटेड है. देयर आर स्पिन ऑफ्स, सिविलियन यूज होती है, बट गवर्नमेंट हैज़ टू बी द बिगेस्ट प्रोक्योर. तो ये जो इन्होंने चेंज जो बनाया वेस्टर्न वर्ल्ड ने, एंड ऑल द टॉप मैन्युफैक्चरर्स टुडे ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स आर ऑल प्राइवेट कंपनीज. They are not government owned companies, they are all private companies, but backed very strongly by the government. This was lacking. हमारा था, public sectors were there, आपने कहा HAL and all those things were there, but when the private sector also comes in, the mind change of a scientist also changes. Accountability changes. आपने जो बोला ना, slow process becomes faster. सर, एक वर्ड जो बहुत सुनने को मिल रहा है वो है ओपन साइंस. ये है क्या? ओपन साइंस क्या है सर? हाँ श्वेता, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज इट्स अ वेरी कंटेम्पररी एंड रेलेवेंट थिंग, और इंडिया के लिए एक महत्वपूर्ण है, बिकॉज we have a big focus on digital public infrastructure. So everything that we are doing today, luckily all our national missions are today based on convergence of knowledge and using that convergence to create technology platforms to provide end mile solutions and needs of the people. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, आपने सुना होगा हेल्थ स्टैक बना रहे हैं, एग्री स्टैक बना रहे हैं, तो इसमें जितना डेटा कलेक्ट हो रहा है, जो साइंटिस्ट जैसे शोध करेंगे, जो डेटा, सो मेनी लैब्स आर वर्किंग, स्पेस से इतना डेटा डाउनलोड हो रहा है, ओशन से इतना डेटा आ रहे हैं, तो इनको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में अगर लाना चाहते हैं, तो वी नीड टू एम्ब्रेस द कंसेप्ट ऑफ ओपन साइंस. इट इज़ अ कल्चरल शिफ्ट दैट वी नीड. तो इसमें क्या होगा कि द होल प्रोसेस ऑफ हाउ डू वी डू साइंस, हाउ वी एडमिनिस्टर साइंस, how do we do science, how do we measure the output metrics, everything is publicly available on an open source platform. कहीं ना कहीं सर ये साइंस डिप्लोमेसी में भी हेल्प करेगा सर? बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है. They do so because it brings again, everybody today looks at data as a fuel. हाँ, next हमारा जो economics hoga, it will be run on data. So if your data, why India wants to, why the rest of the world wants to embrace India? Because they want India's data. Because the amount of data we have, 140 crore people, whether it is health data, whether it's a large country, agriculture data, water data, phenomenal amount of data we have. So if we are able to showcase that on a digital platform, which is a well protected platform, which depending on the needs, people can get access. Whatever is strategic is strategic. If you do what I say, a red light and a yellow light and a green light with your data, so and these can only become when you make a strong digital platform based on that. So this also helps your international engagement, your people coming forward to work with you. आज global development centers सारे बन रहे हैं इंडिया में, essentially because of India's inherent strength. Everybody knows we are an IT nation, a software nation. What we lack is the hardware. We have to become a product nation. So these are all linked together. I think it's important that India creates a very open and robust science and technology mechanism which is transparent, based on clear input, throughput, output metrics, and this is all what is open science is. So इसमें citizens भी involved हो जाएंगे. Sir, being associated with the Office of Principal Scientific Advisor to the Government of India, and you yourself working in the lab, then your association now with earlier with IIT Kanpur, अब दिल्ली के साथ है आपका. So इतने सारे प्लेटफॉर्म पे रहने के बाद कौन-कौन से फ्रंटियर्स आप देखते हैं जहाँ पर अभी भारत को काम करने की आवश्यकता है, चैलेंज है? जो नए एरियाज है, मैं तो जिक्र किया ही आपको, जैसे साइबर फिजिकल सिस्टम,
हम जो साइबर फिजिकल, अब वी आर मूविंग टू अ साइबर फिजिकल वर्ल्ड. फिजिकल एंड साइबर का सीमलेस जिसको कहते हैं कि हाँ कोऑर्डिनेशन और वो हो रहा है, सीमलेस मैचअप हो रहे हैं. तो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी, ये सब नए एरियाज हैं. सो द क्वांटम फ्रंटियर्स इज द न्यू फ्रंटियर्स. थर्ड, a very promising area, I think, where India can really do great. We have done good in drugs, pharma, biotechnology, bioengineering and biomanufacturing. So, biofoundry is a new concept. So, how do you use, say, a plant tissue and use that plant tissue to make a smart textile? Okay. So, biology, manufacturing based on biology, synthetic biology, आपने सुना होगा, आज ही पेपर में देखी होगी आप, they have developed a new variety of rice that can withstand high temperature, that will absorb less water, and productivity through gene editing. And it's not GM crop, by the way. The gene which is present, you just change that gene, not bring in gene from outside and put it, which just becomes tweaking it. No, just tweaking it using a scissor. So this is, and this this is called bioengineering, synthetic biology. So this is a new area that India has to look into. The next area India has to look into is 6G, 7G. Communication is going to be your backbone. Aaj you're connected with the world with your mobile phone. And you cannot rely on others to do that. So communication, looking at the next frontiers of communication, is going to be very, very important. And this is both strategic and non-strategic. Have you started to work on these? We have started working in a big way now. We've started slowly moving in those directions. They are all our national missions: semiconductor mission, electric vehicle, EV, non-renewable energy, green hydrogen generation. So these are some of the new areas that India has very rightly got into. But one of the very interesting areas which I think we can do a lot, and my own area, I might be selfish in saying that, but I feel it has a huge potential, is the oceans. The ocean is the last frontier now on this earth. And you would be amazed to know, Shweta, only we know 2% of the biological life that exists in the ocean. 98% is still not known to humanity. And so it's an amazing storehouse of both living and non-living resources. Amazing. And we today have a coastline, by the way, we used to say we have a coastline of 7,500 kilometers. It has been remapped. We have a coastline of 11,000 something kilometers today. Yes, because we have now properly mapped all the islands, all the coral reefs using satellite technology and other technology. Vast ocean. No country has an ocean named after itself. Of course, Indian Ocean. Right? And it stretches from the peninsular India up to Antarctica. Very little is known. And what took you to, you're talking of ocean. So what that's took a you very to Antarctica? That is very interesting question. When I was doing my master's, rather I was doing my bachelor's, early 80s, the leader of the first Indian Antarctic expedition, Dr. Syed Jahur Qasim, who unfurled the Indian flag in Antarctica. After his first successful expedition, he went around all the state capitals, and in the national science museums in each state capital, he delivered a lecture. Achha. I was a student in Patna doing my BSc in geology. I heard Dr. Qasim, and he talked about marine geology and marine science and Antarctica, and that motivated me, to take up this line. So ocean is a huge storehouse of wealth today, but it has to be explored, it has to be surveyed, and it has to be exploited in a sustainable manner, because it has a grave influence on your weather climate pattern, right from Antarctica to ocean circulation, everything. So this is a promising area where India has to now look. Take a dive. Take a dive. That's a good way of putting it. And today you talk of the next generation of electric vehicle and the battery technologies. They all depend on rare earth elements, cobalt, lithium, the minerals which we don't find on the continent, but they are abundantly present in your neighboring waters, in your surrounding waters, in your EEZ, or maybe beyond in the high seas.
So you need to survey them properly, you need to catalog them, and then you need to have a technology to extract them without disturbing the marine environment. So basically we have all the resources, be it manpower, brain, or even the resources available underwater. But we just need the right technology. We need right technology. We need human capacity building also. If you look at ocean science, there are hardly a few institutions. I can just count a few of them who are really working in the ocean. Such a large ocean, and very few people. So I think there is a need there to focus. Now India is like in outer space. We should take a leadership in, I call inner space, the oceans. One of the very interesting thing India is doing, which a few advanced countries have done, is now we are developing our own manned submersible, where people will sit inside, and that submersible will take you like a submarine. It will take you 6 kilometers inside the water. Okay. And you can really see the ocean bottom. So we are in the process. I think in a year's time we'll have our own submersible that can go to the bottom of the ocean. मैं जब PhD किया कैम्ब्रिज में, हमारे जो ओशन सैम्पल्स थे वो सबमरीन से, अमेरिकन सबमरीन ने कलेक्ट किया था, उस सैम्पल्स में मैंने काम किया. अच्छा. हाँ, तो advanced countries have done it 30 years ago, but I feel there is a great scope for India to really look at that area. And the Prime Minister have talked about Samudra Manthan, he has talked about Sagar Mala. So if you are able to connect all our ports together and create a, so because all the future trade, commerce, everything depends on the oceans. Energy from the ocean is again a huge opportunity. So I think this is a very promising area where I think India needs to invest and look into more closely. Thank you so much, sir. हमसे बातचीत करने के लिए. Such an informative, insightful talk we had. Thank you so much. Thank you so much.